Good morning, students. So in a previous lecture we have studied polarity of bonds. Okay, बहुत ही easy topic था. Okay, next topic is valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory. First of all, Lewis and Koshel gave the first information about the chemical bonding, and then second theory was proposed, the valence shell electron pair repulsion theory. But first, when the valence shell electron pair repulsion theory was proposed, it was not so famous. In 1940, Sidgwick and Powell proposed a simple theory. In 1940, Sidgwick and Powell proposed a simple theory, simple electron pair repulsion theory उन्होंने propose किया. But in 1957, when Nylon and Gillespie proposed theory, उसने क्या किया, उसने वो थियोरी को डेवलप्ड किया एंड रीडिफाइंड किया. दे हैड डेवलप्ड एंड रीडिफाइंड द थियोरी in 1957 and they gave the postulates of this theory, and they are very important, and I can say that they gave very much information. They gave very more information about the shape of the molecule. So main postulates देखते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है the shape of the molecule. याद करो, Lewis and Koshel gave such type of theory, and in that they gave octet rule and the limitations of octet rule. याद करो, इसके अंदर था octet rule, और Lewis and Koshel का जो थियोरी था वो क्या था, उसके अंदर लिमिटेशन में डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. एंड हियर द फर्स्ट पोस्टुलेट इज दैट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल depends upon the number of valence shell electron pair. The main postulate के अंदर first देख रहे हैं, the shape of the molecule depends on the number of valence shell electron pairs. and वो कौन से टाइप के हो सकते हैं, bonded and non bonded around the central atom. So what is bonded electron and what is non bonded electron, वो सबसे पहले देख लेते हैं कि bonded electron किसे बोलेंगे. So the valence electron which are used to form a bond, and यहाँ पे क्या आ जाएगा, valence electron which are not used to form a bond. Bonded electron, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर यूज्ड टू फॉर्म अ बॉन्ड, एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है ही वो, बट वो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते हैं, उसको बोलेंगे हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पैर. फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, atomic number of nitrogen is 7, electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. So valence electron कितने हो जाएंगे,
n is equal to 2, so valence electron is 5. Number of valence electron is 5. So if we want to write according to Lewis electronic configuration, so we will write this way. Now there are 5 electrons, and in these 5 electrons some electrons are bonded and some electrons are non bonded. तो कैसे हमें पता चलेगा? तो कंपाउंड से हमें पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, कौन सा नहीं है. सो सिंपली हम लोग ऐसा करते हैं, NH3 मॉलिक्यूल लेते हैं जिसके अंदर हमें पता है नाइट्रोजन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन टू each हाइड्रोजन and it will form NH3. So in that we can see that this electron pair which does not take part in the formation of bond, so these are non-bonded electron pair, and these electrons which are used to form a bond are known as bonded electron pair. Electron pair and electron दोनों different है. pair मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन हैज 1 पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. 1 पेयर, दैट मीन्स नाइट्रोजन हैज 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बट 1 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो ये समझना है कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा है. सो द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom. Second postulate is the pairs of electron in a valence shell repel. The pairs of electron in a valence shell repel one another since electron clouds are negatively charged. We already know that electrons are negatively charged and they repel each other. So this postulate is very simple. The pairs of electron in a valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग जानते ही हैं कि electrons are negatively charged and they repel each other. Third point is these pairs of electrons tend to occupy such positions in space that minimize repulsion. ये बहुत ही important word है, minimize repulsion and thus maximize distance between them. The electron pairs occupies such positions in space that minimize repulsion and thus maximize distance between them. For example, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए मैग्नेट का. We all know that the नॉर्थ पोल रिपल करेगा, साउथ पोल सेम पोल्स होंगे, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल ये है, दोनों मैग्नेट है, दोनों के नॉर्थ पोल में एक दूसरे के सामने रख रहा हूँ, तो क्या होगा, उसको मैं जैसे नज़दीक ले जाऊँगा तो रिपल्जन होगा. सो वैसा ही यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्जन है. सो रिपल्जन मिनिमम हो एंड डिस्टेंस मैक्सिमम हो, इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ रह पाएंगे. द सेम वे द pairs of electron tend to occupy such position in space that minimize repulsion and thus maximize distance between them. Next point is the valence shell is taken as a sphere. Valence shell is taken as a sphere with electron pairs
localizing on the spherical surface, localizing on the spherical surface at maximum distance from one another। तो जो ऊपर का पॉइंट है उसी को ज़्यादा डिस्क्राइब किया है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन पैर्स एक दूसरे के साथ रहेंगे। The valence shell is taken as a sphere with the electron pair localizing on the spherical surface at maximum distance from one another। That means bond का जितना maximum distance हो सकता है उस maximum distance पे वो रहेंगे, और maximum distance से क्या होगा, repulsion minimum होगा, तो stability भी maximum हो जाएगी। Next point is multiple bond is treated as if it is a single electron pair। ये याद रखना है, multiple bond is treated as if it is a single electron pair and two or three electron pair of multiple bonds are treated as a single super pair। Multiple bond is treated as if it is a single electron pair and two or three electron pair of multiple bonds are treated as single super pair। So बहुत ही सिंपल postulates हैं। Now last postulate हमारा, when two or more resonance structures can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any such structure। What is resonance we will see later, but याद रखना कि two or more resonance structure can represent a molecule, then the VSEPR model is applicable to any such structures। So these are the 6 main postulates of VSEPR theory। Now we will write the repulsive interaction of electron pairs, because there are two types of electron pairs, bonded and non-bonded। Non-bonded electron pairs are known as lone pair electrons। So always remember, non-bonded it is known as lone pair electron and it is represented by LP, and bonded electron pair is represented by BP। So lone pair LP and bond pair BP। So repulsive interaction of lone pair is maximum, lone pair is maximum, lone pair bond pair and last bond pair। The repulsive interaction of lone pair electron is maximum, then lone pair bond pair and last bond pair। ओके, सो ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में भी ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सो आपको इसको याद रखना है। ये जो ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, सबसे ज़्यादा रिपल्जन होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लास्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ in a compound we can identify which are bond pair and which are lone pair। For example NH3 में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो बॉन्ड बनाने में यूज़ होते हैं वो आपके बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, जो नहीं यूज़ होते हैं वो लोन पेयर हो जाएंगे और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। सिंपल थियरी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन VSEPR थियरी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 पोस्टुलेट एंड लास्ट जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस थियरी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।